Yes, hello everyone. Jai Hind and a very good afternoon. Welcome to the class. Yes, quickly give me the confirmation if I'm properly audible. Yes, Jai Hind. Okay, all right. So let's get started with the class. Today we are discussing class 9, MCQ chemistry. We will be discussing and talking about thermodynamics, important concepts, numericals, and the MCQs. Okay, right. So, yes. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस दी शेड्यूल। देखिए आज का शेड्यूल क्या है, 9 AM पे डेली डिफेंस अपडेट्स की क्लास होती है। ओके, 10 AM पे डेली करंट अफेयर्स, देन 9:30 यू हैव दिस इंटरव्यू क्लास। ओके, इंटरव्यू लाइव क्लास, अ सेपरेट बैच फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन इज देयर। देन फॉर द NDA like for the NDA batches, so 11:30 you have GK, 1 PM chemistry. CDS you have 11:30 GK, 1 PM chemistry, and 4:30 English. Okay, so yes, after this you'll be having one English class at 4:30 PM. Okay, so yes, this is it. Now can we start with the questions? So this is the first question. Yes, okay, thank you for confirming. All right, so yes, tell me the answer for this. Which of the following is an extensive property? Temperature, entropy, pressure, density. Okay, can I get more answers from all of you? Okay, so let's check for the answer. देखिए correct answer इसमें B है, that is entropy. Okay, so yes, you have answered correctly. Very good. Okay, just let me. Okay, okay. All right. So यहाँ पे देखिए entropy है. So extensive properties जो होती हैं, they depend on the amount of substance that is present. Okay. So entropy is proportional to the number of molecules, making it extensive. Temperature, pressure, density, these are intensive property. Extensive property किस पे depend करता है? On the amount of substance that is present. यहाँ पे देखिए examples भी हैं. Now अगर और डिटेल में आपको समझना है तो extensive property depend on how much how much matter a sample contain. Okay, an intensive property will not going to depend on the amount of matter. ठीक है, उसके अंदर कितना amount of substance है उस पर depend नहीं करता है, जैसे boiling point. ठीक है, water कितना हो, कम हो, ज्यादा हो, the boiling point will remain same. Okay, similarly for temperature, concentration and luster. Okay, now if we talk about the extensive property, इसमें amount of matter पे वो depend करता है, जैसे weight है, length है, volume है और entropy है. So correct answer will be B, entropy. Next is the first law of thermodynamics is a statement of the conservation of. The first law है thermodynamics का. What does it talk about? The conservation of which? Mass, energy, momentum or entropy. Okay, let's see. Yes, very good. Excellent. So B is the correct answer. That is energy. Okay. So first law states that energy cannot be created or destroyed. Only it will be like transformed or get transferred from one to the other object. So energy cannot be created or destroyed. It can only change forms or be transferred from one object to another. Okay. So yes, this is it. यहाँ पे ये formula भी है. You know, internal energy, heat and work done, right? Like all of it are energy. ठीक है, internal energy भी energy है, heat is also energy, work is also energy. So here you can see कि यहाँ पे कुछ create energy नहीं हो रही है, ना ही destroy हो रही है. It is just getting converted into the other forms. Next is if a gas expands. Yes, please. You can post your doubt if you have any. Okay, you can write your doubt in the chat box. Regarding this question, you have any doubt? Yes, please ask in the chat box, okay?
All right. Next is if a gas expands at constant temperature, its internal energy will increase, decrease, remain the same, first increase, then decrease. अगर एक गैस है जिसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड किया जा रहा है, ओके, सो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा? Okay, all right. So you haven't attended the concept classes. Okay, very well, very well. So like ओके, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यू मस्ट हैव द एक्सेस ऑफ द एलएमएस, ओके, राइट? एलएमएस का एक्सेस होगा आपके पास, देयर आर रिकॉर्डेड क्लासेस देयर, ओके, द वीडियोस आर देयर, यू कैन गो थ्रू द द क्लासेस, ठीक है? आप वो क्लासेस देखिए, वीडियोस देखिए, एंड देन यू कैन कम टू द एमसीक्यूज, राइट? But still you are able to answer all the question, that's very good. Okay, right? So you can just you must have the access of LMS. Do you have the access LMS ka? Yes, no, okay, all right. So you can connect with the defense counselors, okay, regarding it. They will going to provide you the access of the LMS, and then you can go through the videos, okay? But if you are not able to see, just let me know tomorrow, okay? Right? Yes, LMS. All right. Now please try to answer this. Yes, just connect with the defense, mentors and the counselors, right? And you can ask them to provide you the access of the LMS. Yes, what will be the answer for this? Okay, just try connecting with them today only. So if you have any problem or if you are not able to see the concept classes, I'm going to provide you another contact detail. Okay. Yes, gas expand at constant temperature, its internal energy. देखिए इसकी internal energy क्या होगी? It will going to remain the same. Okay. So for an isothermal process जिसमें कि temperature constant है, okay, since internal energy depends on temperature और temperature ही constant है तो internal energy zero हो जाती है because change in internal energy is zero. Okay. जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ही जीरो हो जाती है बिकॉज देयर विल बी नो चेंज सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिप्रेजेंट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें से कौन सा कंडीशन है जो रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डेल्टा जी इज लेस दैन जीरो। ओके, सो नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी इंडिकेट अ spontaneous process. Okay, right? So yes, the correct answer will be delta G is less than zero. ओके, नेक्स्ट बताइए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट और प्रेशर? यस,
तो हमने आइसोबैरिक पढ़ा है, आइसोकोरिक पढ़ा है, आइसोथर्मल पढ़ा है और एडियाबैटिक पढ़ा है. दीज आर द 4 different processes that we have studied. Okay, so yes, which of the following remains constant? ओके, हीट विल बी कांस्टेंट. ओके, देखिए अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ओके, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ओके, सो इट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है. राइट, सो एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज, सो Q will be is equals to 0. Next is the enthalpy change, that is delta H for an exothermic reaction is always positive, negative, 0 और unpredictable. So enthalpy change जो है delta H जो है for an exothermic reaction. ठीक है, exothermic का क्या मतलब है, इसमें heat release हो रही है. ठीक है, heat is released. Right. Okay. एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए याद रखिएगा, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, कोई चीज बाहर जा रही है तो कम होती है. ठीक है, राइट, बिकॉज इट इज यू नो बीइंग एक्सपेल्ड और इट इज बीइंग रिमूव्ड. सो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं. तब जो डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंस दे रिलीज हीट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एंडोथर्मिक में दे विल गोइंग टू अब्सॉर्ब हीट, सो वो पॉजिटिव हो जाएंगे. राइट, इस तरह भी आप याद रख सकते. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क और एंट्रोपी. Yes, C is the correct answer. That is work. Work is not a state function, rather it is a path function. ठीक है, ये आपको बताया गया, इसको फिर से समझ लीजिए. देखिए जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई आई टेक इट. ओके, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. अब देखिए अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हम वॉक करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो गया, सपोज 5 किलोमीटर हम वॉक करते हैं. राइट, और फिर हम बी से फिर ए जाते हैं 5 किलोमीटर. ठीक है, तो पहले हम ए से बी गए, फिर बी से ए गए. अब यहाँ पे देखिए ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बी से ए. तो अगर आपसे पूछा गया टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, तो डिस्टेंस में हम ऐड करके लिख देंगे, 5 + 5 वो हो गया 10 किलोमीटर. हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस की बात. डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट. ओके, अब देखिए इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है. राइट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. राइट, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन. ठीक है, पाथ जो हमने पाथ ट्रैवल किया है उस पर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, सो इट इज अ पाथ फंक्शन. ओके, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज स्टेट फंक्शन. राइट, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए वर्क जो है. ओके, सो स्टेट फंक्शंस डिपेंड ऑन इनिशियल एंड दी
फाइनल स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, और नॉट ऑन द पाथ, और लेकिन जो वर्क है डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ओके, सो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, राइट, yes, okay, it will be zero. So I hope this is clear. आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से याद रख सकते हैं, बहुत इजी सिंपल है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। इफ 5 moles of an ideal gas expand reversibly and isothermally at 300 Kelvin from 5 liter to 20 liter, वर्क डन आपको बताना है, ठीक है। सो सी वी आर डिस्कसिंग लाइक क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपके जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप फॉर्मूला में यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गोइंग टू गेट द आंसर, राइट। सो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। एंड वन मोर बुक, आरसी मुखर्जी सर की एक बुक है केमिकल कैलकुलेशंस की, यू कैन यू नो गो थ्रू दैट बुक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते, ओके। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वर्क डन, यहाँ पे मोल दिया है n, ठीक है, गैस इज एक्सपैंडिंग रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, टेम्परेचर दिया है T, वॉल्यूम क्या है 5 लीटर से 20 लीटर, V1 और V2 दिया है। अब वर्क डन निकालना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT लॉग वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मोल आपको 5 दिया है, ठीक है। आर जो है दिस इज द गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 8.314 होती है। टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो 300 कर लेंगे, ठीक है। फिर लॉग लिखेंगे और फाइनल वॉल्यूम आपको 20 लीटर दिया है, ओके, और इनिशियल कितना दिया है 5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गोइंग टू गेट द आंसर एज -2873 जूल, राइट। तो बस इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू नीड टू रिकॉल द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें आपसे कोई बहुत यू नो बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ओके, नो इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। चलिए नेक्स्ट बताइए। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। सो गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसमें कौन सा इक्वेशन सही होगा। यस, ए। देखिए इसमें करेक्ट आंसर सी है, ओके। डेल्टा जी माइनस आर टी, दिस इज लॉग के, ओके। तो यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, डिग्री, राइट। नेक्स्ट बताइए। एफिशिएंसी ऑफ अ कारनोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 400 एंड 300 केल्विन, ओके। तो ये भी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी और टेम्परेचर का। देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको उसे पढ़ना है ध्यान से एटलीस्ट ट्वाइस, ओके। उसके बाद वॉट एवर इज गिवन, जैसे यहाँ पे T1 और T2 दिया हुआ है, दो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं, तो आपने इसको लिख लिया, ओके। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, और आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। राइट, यस यस यस, इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग, राइट, यस यस। ओके, तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस, दिस इज टेम्परेचर 1 अपॉन 2, ओके। तो आपको पहला टेम्परेचर यहाँ पे
जो हाईएस्ट है वो आपका T2 हो जाएगा, ठीक है, जो हाईएस्ट है दिस विल बी T2 एंड दिस विल बी T1, ओके, बिकॉज सबसे लाइक 300 से 400 गया होगा, राइट? तो ये फॉर्मूला होता है, दिस इज T1 by T2, just a minute, just no, this will be just a minute, just let me, yes, it's T2 by T1, okay, it's T2 by T1, okay, ये फॉर्मूला होता है, yes, okay, T2 by T1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस T2 क्या हो गया, T2 will be 300 and T1 will be 400, आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will going to get 0.33, ओके, जो इसको फिर 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिलेगा 33.3%, ओके, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला T2 by T1 एफिशिएंसी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, ओके, yes, that is known as delta G naught only, right? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0, इक्वल टू वर्क डन, नेगेटिव और इनफाइनाइट। यस, heat absorbed by a system in a cyclic process, so cyclic process, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना, हीट अब्सॉर्ब बाय सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ओके, 0 होगा, इक्वल टू वर्क डन होगा, नेगेटिव होगा या इनफाइनाइट होगा। लेट्स डिस्कस, ओके, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई भी आइडिया, लाइक यू कैन मेक एनी गेस ऑल्सो, ओके, द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू वर्क डन, ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे देखिए जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 हो जाती है, तो ये जो Q है ये W के बराबर होगा, ठीक है, वैसे आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला, राइट, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, राइट, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ओके, हीट विल बी इक्वल टू वर्क डन, सो दिस इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वर्क डन और हीट के बीच में डिवाइड हो जाता है, ओके, सो अगर इंटरनल एनर्जी 0 हम रख देंगे तो क्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और ऐसा ही होता है साइक्लिक प्रोसेस में, ओके, राइट। See, a series of transformation by which the state of a system undergo changes, but the system is eventually returned to its original state. Okay, so there are changes happening, but क्योंकि ये cyclic है, so you know from where it has started, it will going to come to its original state. Okay, right. So yes, the correct answer will be B here, equal to work done. Next is the entropy of a perfectly crystalline substance at absolute 0 is 0, maximum, minimum but not 0, infinite. Yes. Entropy of a perfectly crystalline substance at absolute 0 is. So this is taken from the third law of thermodynamics. Okay. जो एंट्रोपी होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, एब्सोल्यूट 0 मतलब 273 केल्विन पे एंट्रोपी क्या होगी, यस इट इज 0, वेरी गुड, ओके, राइट, सो यस दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज 0 एट द टेम्परेचर लाइक अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट 0, ठीक है, okay, next is which thermodynamic property determines the feasibility or possibility of a reaction, इसमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है दैट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और इट कैन हैपन, इट इज फीजिबल, यस,
Enthalpy, entropy, Gibbs free energy or internal energy? Very good. Yes, it's the Gibbs free energy. Okay. So the sign of delta G determines whether a reaction will proceed spontaneously or not. ठीक है. अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में ऑलरेडी. ओके. एंथैल्पी पॉजिटिव हो, एंट्रोपी नेगेटिव हो, एट ऑल टेम्परेचर ये अगर पॉजिटिव है तो दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके. अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, टेम्परेचर लो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई होगा तो स्पॉन्टेनियस. ओके. एंथैल्पी नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी स्पॉन्टेनियस. एंथैल्पी नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव, टेम्परेचर लो होगा तो इसमें स्पॉन्टेनियस होगा, और हाई होगा तो ये डेल्टा जी विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके. तो देखिए लाइक होता क्या है, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस हम पढ़ते हैं. ठीक है. और इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, लाइक लिंक्ड टू दी स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है. जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आपको सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में दिखेगी? गैसेस में, ऑब्वियसली. ओके. क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सो लार्ज, द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड प्रॉपर्ली और वेरी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है सॉलिड में. लिक्विड में उससे ज्यादा रैंडमनेस होती है, और गैसेस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है. ओके. सबसे ज्यादा डिसऑर्डर आपको गैसेस में दिखेगा. इसीलिए एंट्रोपी जो होती है वो गैसेस की मैक्सिमम होती है और सॉलिड की मिनिमम होती है. लिक्विड लाइज इन बिटवीन दोस टू. ओके. तो एंट्रोपी का मतलब द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस. ओके. राइट. So yes, Gibbs free energy will going to tell you the possibility of a reaction. Okay, next is the heat required to change 1 mole of liquid to vapor at constant temperature is heat capacity, heat of formation, heat of vaporization, or latent heat. Yes. वन मोल ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेटेंट हीट. जब 1 मोल लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. See, what we call it, we're going to call it as the heat of vaporization. Okay. So this is the enthalpy change for liquid to gas conversion. Okay. तो ये देखिए enthalpy का ये रिएक्शन है, और ये आया कहाँ से? जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं ना, Q इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W. ओके. यहाँ पे बस क्या करना है, दिस विल बी सेम, Q इज द हीट एनर्जी देयर, और यहाँ पे एंथैल्पी हो गया वो. ठीक है. और ये हो जाएगा लाइक वर्क डन विल बी PV, लाइक प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ओके. बस अगर आपको एंथैल्पी यहाँ पे निकालना है तो इसीलिए इसको U प्लस PV कर दिया जाता है. तो इसी फॉर्मूले से ये आया है एंथैल्पी का इक्वेशन. राइट. ओके. सो दिस इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Next is the work done in a free expansion of a gas is the work done in a free expansion of gas is positive, negative, zero or infinite.
सी, यस, ओके, सो यस, फ्री एक्सपेंशन में नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ओके, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही है कि लाइक देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, सो यस, वर्क डन इज जीरो. Yes. So the correct answer will be zero. Okay. Next बताइए, the Helmholtz free energy is given by. Helmholtz free energy का क्या फॉर्मूला होगा? Yes. Okay. What about others? Yes. देखिए, इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाता है. ठीक है, U माइनस टी एस. ओके, प्लीज इग्नोर दिस. ओके, सो यस, देखिए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है दैट मेजर्स द यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ क्लोजली थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. इसका मतलब जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके, सिस्टम भी क्लोज्ड. आई होप यू ऑल नो अबाउट द ओपन, क्लोज्ड एंड द आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन सिस्टम वो है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्लोज्ड सिस्टम है. और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी मैटर किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. ओके, तो ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो यूजफुल वर्क को कैलकुलेट करती है. कहाँ से? फ्रॉम अ क्लोज्ड सिस्टम जिसमें कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, तो लाइक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. ओके, और यूजफुल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए this thermodynamic quantity is used for a closed thermodynamic system. Okay, तो इसको डिफाइन करते हैं. A इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस. टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, एस हो गया एंट्रोपी. ठीक है, जिसमें जूल पर केल्विन इज द यूनिट फॉर एंट्रोपी. ओके, राइट, एंड अर्ग्स पर केल्विन ये सीजीएस में है और ये एसआई यूनिट है एंट्रोपी की. ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. कभी कभी आपको यूनिट भी चेंज करने के लिए आता है, लाइक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको दे दिया जाएगा कोई सीजीएस यूनिट में और आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज अदर यूनिट्स आर इन दी एसआई वन. ओके, तो बाकी सब एसआई में दिए, कोई एक सीजीएस में दिया है, तो आपको उसको भी एसआई में कन्वर्ट करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है. सो इंटरनल एनर्जी इज जूल और अर्ग्स इन सीजीएस, राइट. ओके, सो कोई भी एनर्जी होगा जूल्स और अर्ग्स होगा, and absolute temperature is Kelvin. So this is the formula for it. Okay. Next बताइए, the change in enthalpy for an ideal gas depends on. जो enthalpy change है मतलब डेल्टा H की बात हो रही है यहाँ. आइडियल गैस पे लाइक फॉर एन आइडियल गैस ये किस पे डिपेंड करता है? आइडियल गैस के लिए प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ओके, लेट्स सी. तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाता है, टेम्परेचर ओनली. ओके, सो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. ओके, डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर ओनली. चलिए नेक्स्ट बताइए. यस, देखिए, टेम्परेचर पे इसलिए भी डिपेंड कर रहा है, ओके, बिकॉज यहाँ अगर आप एंथैल्पी का रिएक्शन देखें, यहाँ इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ओके, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, एंथैल्पी डिपेंड्स ओनली ऑन दी टेम्परेचर, नॉट ऑन दी प्रेशर और वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट बताइए.
Which law of thermodynamics states that the entropy of an isolated system always increases? कौन सा लॉ है जो एंट्रोपी के बारे में बात करता है? Entropy of an isolated system always increases. First law, second law, third law, or zeroth law? Yes. Very simple one. We have discussed all the four laws, zeroth, first, second, third. एंट्रोपी के बारे में किस लॉ में बात करी गई है? Yes. Yes, very good, excellent. It's the second law, okay? Second law of thermodynamics states that entropy always increases for an isolated system, okay? तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। आपको डेल्टा एस दे दिया जाएगा, टी दे दिया जाएगा, आपको क्यू निकालना हो सकता है, या आपको क्यू और टी दे दिया जाए, एस निकालना हो सकता है। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ओके? तो बस आप फॉर्मूला याद रखिए, यूनिट्स सबकी याद रखिए, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। Next, the heat exchange at constant volume is equal to, yes, delta H, delta S, delta G, or delta U. Heat exchanged at constant volume. Heat exchanged at constant volume. Volume constant है और heat का exchange हो रहा है, वो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी के साथ, एंथैल्पी के इक्वल, या एंट्रोपी के, गिब्स फ्री एनर्जी के, या इंटरनल एनर्जी के? enthalpy, delta heat, it is not heat, like it is enthalpy, okay? Heat ही है, but it is known as enthalpy. So the correct answer is delta U, okay? Constant volume पे ये जो like this delta U will be is equals to QV, okay? Right? So that will be the correct answer. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, okay? Right? Next is a system at equilibrium has maximum enthalpy. Yes, it's all right. Maximum enthalpy, minimum Gibbs free energy, maximum entropy, or zero internal energy. Yes. A system at equilibrium has. अगर एक कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो कब हम उसे इक्विलिब्रियम पे मानेंगे? यस, ओके। मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी पे, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है, ओके? देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी से हम क्या पता करते हैं कि रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस होगा, ओके? सो ये देखिए, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, दिस इज द फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, ओके? राइट, सो यस, यहाँ पे H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, राइट? सो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी ही हम देखते हैं, ओके? लाइक उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट बताइए, इफ द, जस्ट अ मिनट, ओके, so okay, so these are the numericals, right? I guess, okay, no, this is a normal question. तो देखिए, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए I have added, like 20 questions are over, okay? I have added 3-4 more questions, okay, right, for discussion, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज पॉजिटिव एट 300 केल्विन, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड, लाइक व्हाट यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ओके? Reaction is spontaneous, reaction is at equilibrium, reaction is non-spontaneous, reaction is fast. Gibbs free energy positive आपको दिया हुआ है, तो reaction non-spontaneous होगा, ठीक है? reaction non-spontaneous होगा अगर Gibbs free energy positive है, ओके? अगर नेगेटिव है तो spontaneous होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, इट इज ऑल्सो फॉर द डिस्कशन पार्ट ओनली। यहाँ पे देखिए, आपसे एंथैल्पी दिया गया है, एंट्रोपी दिया गया है, और टेम्परेचर पूछा गया है,
ओके, तो बस यही वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, G इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। ओके, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया लाइक विच लाइक व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। ओके, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए दिस शुड बी लेस देन जीरो, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, राइट। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंथैल्पी की और एंट्रोपी की, एंड यू विल गोइंग टू गेट द आंसर। ओके, राइट, टेम्परेचर ही आपको निकालना है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी एंथैल्पी एंट्रोपी दिया हुआ है अलोंग विद देयर यूनिट्स। ओके, एट व्हाट मिनिमम टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गोइंग टू गेट द आंसर। ओके, see why I have included these numericals, to get you an idea that only this type of numericals will be asked. Okay, इससे ज्यादा difficult level पे नहीं आते हैं, ऐसे ही simple just to substitute the value. Okay, similarly there is other numericals also. ठीक है, जैसे like enthalpy of vaporization आपको दिया गया है, मोल दिया गया है और आपको टेम्परेचर दिया गया। ओके, आपको इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द एंट्रोपी। ओके, enthalpy is given, mole is given, temperature is given, you have to calculate the entropy, तो बस आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे और you will going to get the answer। okay, then if entropy change for a reaction, entropy change देखिए दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, क्या मिनिमम एंथैल्पी होगी, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी पे। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को जीरो से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो कि गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है, उसको भी जीरो से कम होना चाहिए। ओके, so yes we will going to just substitute the value and get the answer, right। तो बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करेगा। एंड अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बस आपको कुछ फॉर्मुलेज याद रखने हैं, जैसे एंट्रोपी का रखना है। ओके, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, डेल्टा क्यू बाय टी, और एक ये गिब्स फ्री एनर्जी का भी इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी एंट्रोपी और टेम्परेचर का। Okay, so these are the laws of thermodynamics that we have discussed, two system in an equilibrium with third system। Okay, तो अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करते हैं, बट इट विल नॉट गोइंग टू बी नाइदर इट इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हम पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट लॉ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। ओके, सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, एंट्रोपी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग इट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, थर्ड लॉ, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट एज टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब 273 केल्विन पे, ओके, जैसे ही टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है, एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है, राइट। मतलब इस टेम्परेचर पे कोई डिसऑर्डरनेस नहीं रहेगा, कोई रैंडमनेस नहीं रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज। ओके, राइट। एंड द डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है वो जीरो के इक्वल है, और इरिवर्सिबल के लिए जो एंट्रोपी है दैट विल बी ग्रेटर दैन जीरो। ओके, yes, so please make this correction, it is 0 Kelvin only, yes, absolute zero means 0 Kelvin। ओके, एब्सोल्यूट जीरो मीन जीरो। ओके, ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट लॉज जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल्स इजी टू मॉडरेट आएंगे, जो कि आप आरसी मुखर्जी
सर की जो बुक है केमिकल कैलकुलेशन, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते। ओके, राइट। सो यस, एनी मोर डाउट? यस, any more doubt till here, or anything you want me to discuss on Monday, like the tomorrow, like not tomorrow, it's Monday, right? Today is Friday. So Monday को आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं? यस, रिगार्डिंग बायोलॉजी, रिगार्डिंग केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक जो डिफिकल्ट लग रही है, बिकॉज ऑन मंडे वी विल बी हैविंग द लास्ट क्लास ऑन पॉलीमर्स। ओके, हम पॉलीमर्स डिस्कस करेंगे। सो यस, okay, so that pattern of questions, you will going to get questions on laws, okay, and numericals on simple formulae, okay, जो कि हमने डिस्कस किया है। और आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है, इसका भी आइडिया होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या इसके एग्जाम्पल हैं, राइट। एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे सिंपली पूछ लिया जाएगा कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव क्वांटिटी है। ओके, राइट। See, you need at least 2 weeks to complete, okay, because there are 10 classes of each, like I guess 9 classes in biology and 10 for chemistry, okay. So 2 weeks are needed minimum, right? Yes, maximum it can go to 20 days, okay, but you can, like if you are regular, you can complete it within 2 weeks or 15 days, right? Because see what happens is daily there will be like one class was there, okay, तो 1 घंटे का जो क्लास रहता है वो आपको देखना रहेगा, ठीक है, उसके बाद भी आपको 1 घंटा उससे पढ़ना भी है, राइट। एक बार आपने क्लासेस देख लिया, then you need to look at the notes also, you have to read it once twice, okay, revise the things, and then you can move to the MCQs, okay. So it will go like it will going to take, अगर आप डेली एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, so you will require 2 to 3 hours at least, okay, right, apart from the class, like including the class, okay, 1 hour for class and 2 hours for the self study, right. So yes, if you dedicate daily 3 hours for like take 1 week, okay, daily 3 hours for 1 week for biology, and then the next week for chemistry 3 hours, right? Okay, right. So yes, this is all about the class. Can we end the session? No, no, no. Like the course is already completed, right? We are done with the concept class. We are done with the MCQs of both biology and chemistry, right? Okay. For the further classes, you will be noted, like, okay, you will be notified for that. ठीक है, चलिए, okay. So yes, anything else that needs to be discussed for the last class on Monday? Everything is clear, right? So we will be discussing polymers, their examples, their uses, okay, and the MCQs, right? Okay, all right. So let's end the class. Thank you so much, everyone, for joining in. Jai Hind.